Namaskar, Khushamdeed, Saswekal, hello, and a warm welcome to Lockdown Talks 4.0, presented by Sanskriti Events. As many of you know me and many of you don't, so here I am, model and anchor, winner of Queen of Brilliancy India 2017 and a renowned stage anchor, P.S. Geet. And guys, today I have come up with a very musical show. Like it's amazing because आज हमारे साथ एक ऐसी अमेजिंग आवाज है जो आप पहले भी सुन चुके हैं लेकिन आज उस आवाज का अंदाज थोड़ा सा अलग है. जी हाँ, this voice is really mesmerizing. Performer, composer, and playback singer, none other than, please put your hands together and to welcome Sukanya Ghosh. So here. Hello. How are Hi you? Sukanya, I'm good. How about you? I'm doing good. Thank you so much for that lovely welcome and the lovely And I must introduction. say, you are looking pretty in this burgundy color. You are looking gorgeous. Thank you. I love this color Okay, actually. and this color is really nice. In a wine color. It's so catchy. I guess Yes, many of the yes. girls like this color. That's Yes. lovely. Many. So Kanya, as we can say, we are going through with this lockdown stuff, and Yes. many of us are getting frustrated and devastated with this Hmm. lockdown. So हाँ. how is your lockdown going on? यार when the lockdown पहले announce हुआ at that time, first of all, like all the shows got cancelled. We had 3 bookings. Right, एक दिन में everything got cancelled. So right. I उधर can. like दिल के अंदर like धक started, because you Right, you work so hard to make things happen, and when things happen suddenly this. But I had a inclination कि ये चलने वाला है because I was getting reports from other countries also. Things are very bad. So my friends right. there, they were all telling me कि it's going to get really bad. So I was mentally preparing myself कि ये होने वाला है and ये चलने वाला है. So that helped me in the after first 2-3 days, that understanding that this is a global issue. सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, तुम्हारे साथ हो रहा है, सबके साथ हो Right. रहा है. So I Everybody's decided. facing the same. Absolutely. So I decided कि I'm going to break out of the negative cycle. तो first thing I did is I stopped watching news continuously, क्योंकि एक हो रहा था कि दिन भर जो updates आ रहे Right. थे I was watching it. But अभी मैंने decide किया All एक बार दिन negative. में, yeah, all negative. So एक बार मैं या दिन में 2 बार I will like take updates. बाकी I will shut off all news and just focus on creation mode. तो मैंने इस Right. टाइम पे इतना ज्यादा क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया है that I've really opened up, like brain के सारे bulbs on हो गए. तो for Oh me no, the that's so. lockdown was good in that sense. So yeah. It's like Mentos खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ. Absolutely, The idea that absolutely. Yes, right. yes. So क्योंकि what's कभी कभी हम new जब you are doing in lockdown? हाँ तो in the new things, like see, I have always been a singer and I love music and singing and everything around it. Right. But now I Hmm. was focusing more क्योंकि मैं घर पे थी and I could, ऐसे लग रहा था कि कोई वेकेशन दे दिया है जिसमें मैं अपने तरीके से I can do things. So I Thanks. went Right. into more of listening to music which is really मेरे दिल को जो छूता है, not just music that we sing on stage, Right. but even beyond. फिर I went into composing more tracks. So this year I'm composing Oh, for a nice. film called Project Kahuta. And वो फिल्म भी अभी शूटिंग जस्ट चालू होने वाला था and it just got Oh, वो shelved stop हो because गया. of stop, Really. I mean postpone हो गया. So but they are very excited about the music, तो मैं उसका score पे I was working on that. Then I have a separate Okay. project जिसमें मैं music और साइकोलॉजी को कंबाइन करती हूँ, वेयर आई डू म्यूजिक टू अपलिफ्ट पीपल्स माइंड्स. तो वो एक Oh, नए wow. ब्रांड नेम के साथ आई डू, तो उसके ऊपर भी आई वाज वर्किंग. सो देयर वर मेनी थिंग्स डिफरेंट आई वाज ट्राइंग टू डू. एंड बेसिकली द लॉकडाउन हैज बीन वेरी वेरी क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग. बहुत अंदर तो एक टेंशन है, सबके अंदर है, बट उसको सबके बीट करना पास है. बहुत जरूरी है. आई मीन इफ वी स्टे इन दैट Right. मोड ना, फिर कुछ नहीं होने वाला है. जो भी नहीं हो एक दो चीज पाएगा. हो सकता था वो भी नहीं हो पाएगा. So we have to नहीं हो fight पाएगा. this in the So mind. it's better just to relax ourselves, stop all those negative things, to watch all that negative Absolutely. news and just to work on हाँ. yourself. Be more creative, Yes. be more innovative, get new ideas. Yes.
Right, I Absolutely. completely understand that. And as Absolutely. being the artist, हम तो क्रिएटिव हम्म, होते ही हैं, तो बहुत से आइडियाज हाँ होते हैं हमारे पास जो हमें पहले हमारे पास हाँ टाइम नहीं हाँ, होता था करने का, एंड नाउ वी आर एग्जैक्टली ऑल फ्री, so now we can do it. We एग्जैक्टली, can all just restart it. That's lovely. That's lovely. एब्सोल्युटली So I एब्सोल्युटली। think like once this lockdown gets over, everybody हम्म, has this long bucket list to do. You know, ये करेंगे, कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है घूमने जाएंगे, कोई कह रहा है शॉपिंग पे जाएंगे. What is your bucket list? What is on top in your bucket list? What you यार gonna do फर्स्ट after this lockdown gets फर्स्ट over? थिंग इज, लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा, आई नो कि इवेंट्स शुरू होने में टाइम लगेंगे, लाइक लाइव इवेंट्स, बट दैट इज माय Right. फर्स्ट, लाइक आई वांट टू बी बैक ऑन स्टेज मैन, लाइक आई एम श्योर इट्स द सेम विथ यू, like Sure. stage is my home. I live in the stage. Well, you तो know, मुझे वो stage is चाहिए, our life, stage is our love, stage is our everything, breathe, yeah, stage is our food, everything. seriously, Being an मतलब artist, you cannot live without stage. live without stage. So of course digital media की वजह से हम लोग ये कर पा रहे हैं, like we are able to do this, Right. वो, And thanks but to I want to go Ankit on stage. Sanskriti Events, who Absolutely. actually I gave us mean, this platform. absolutely. So अंकित जी से बात हो रही थी all through the lockdown, and after a point, like initially we were all getting very frustrated, but he said that अभी हम ये चालू करने वाले हैं lockdown talks, and first we did Insta lives, now we are doing this. So Sanskriti Events is one Right. of the companies I think which has really acted by lightning speed, जिसको बोलते हैं, मतलब सब लोग सोच रहे Right, क्या right. करेंगे Very, क्या very करेंगे, quick. but हाँ, क्या करना है? we are like rolling, like we are not even stopping, Right, for listeners and right. viewers. If you see how our roster is, Sanskriti Events के जो planning schedule चल रहा है, I Shows think हैं, every day, right. every day Every there is day. some They are interview, doing 2 something. shows every day. Yeah. या या सो आई वांट टू इनफैक्ट थोड़ा डाइग्रेस करके एक बात बोलना चाहूंगी कि टू ऑल द लिसनर्स, सी वी आर ऑल आर्टिस्ट एंड वी लव एंटरटेनिंग, हमारा ये Hmm. नेचुरल स्टेट है, ओके, देयर इज नथिंग न्यू Right. अबाउट इट, बट because we are going through such a tough time, please support us, because what happens is, और मुझे ये बोलने में कोई I'm not feeling ashamed or anything, I'm saying this on behalf of all of us, कि please support All the us, artists. because as we are going into digital entertainment, we need support from you, Right. even in terms of, you Right, know, right, materially, क्योंकि बहुत सारे right. artists out of their love for the music, dance, पेंटिंग, जो भी करता है वो बिल्कुल. कर रहा है, और वो स्टॉप नहीं कर, Right. इनफैक्ट आर्टिस्ट आर द ओनली पीपल हु डिडंट टेक अ ब्रेक, थिंक अबाउट इट, Great. जो Very true, very true. everybody else took some days of break, we didn't take a single day of break. You see any artist Neither page, on festivals. Neither on festivals. we don't Not take a any single breaks. break. So I know we are all financially going through a tough time, but I'm making this request to everyone who's watching, please spread this awareness that artists are also, you know, we live on this, we don't live by any Right. other job or any other thing. We So don't have any second business basically to second, survive yeah, on. yeah, Yeah. yeah. So We are because just, if art, I'm anchor, I'm just an anchor. You are singer, you're you're just a just singer. We don't have any other yes, job, right? We can't yes, do anything yes, else. yes, Right. yes. And इस चीज पे मैं इंटरनेशनली भी अभी देख रही हूँ, a lot of people are talking about, artists are openly bringing it up, because why should we be ashamed यार, जब आप सैलरी लेने Right, जाते हो अपने obviously. जॉब के लिए, you go everyone, you बिल्कुल. don't say I'm feeling ashamed, money is a bad thing, मुझे नहीं चाहिए, it's okay, we Right. don't say that, no. So for artists also, art is natural, but art also comes at a cost. We all work Cost. very Very hard to true. create this. So वो एक while हिंदी में कहते हैं आप ना कि भूखे पेट तो पूजा भी नहीं होती, तो काम कैसे होगा? absolutely, Facts. like हम I can गाना understand गाते that. रहेंगे, ठीक है, whether you pay us or not, we will keep singing, we will keep Right. dancing, we'll keep entertaining, but it is just nice, you know, if we all come together and support each other in each, like In a कोई भी positive feel, manner, in a yes, positive yes, way. this is the Yeah. time for everybody to come together. So To I stand just together. wanted to Very say true. that, Very true. Very nice तुम्हारा initiative. question वो नहीं था, but I just wanted to add that, it didn't have, so I just No, this is really important for all the viewers who are out there. This is really yeah, important because we as an yeah, artist are now, yeah, you know, out of the blue, we are trying to entertain you guys through yes, any yes, platform. Either it yes, has to be Facebook or Instagram or YouTube or any social media. On the same note, we also need some sort of encouragement from your side, some sort of yes, love and yes, support yes, from your side. So this is yes, really important, and I am really sure people who are watching right now will understand this and will follow they the will, same. they will, they will, they Yeah, will, yeah. yes. So that's really nice, Yeah, Sukanya.
Okay, moving on. Like as a by your surname, I can see that you are Bengali, Yes. Ghosh. Yeah. So Yes. you belong to Calcutta. Kolkata, yes. Okay. So you born and brought up in Kolkata because Yeah, I am asking see, because the a thing lot of is, viewers out there. Kolkata has been my hometown. I moved to Mumbai in Hmm, 2013. तो उसके पहले okay. का जितना भी फॉर्मेटिव चाइल्डहुड इयर्स थे तब मैं पूरा अपना स्कूल कॉलेज में कलकत्ता में की हूँ बट 2019 I moved to Mumbai because I had to of course expand my career and I was Right. doing pretty well in my Calcutta music scene. तो Right. Calcutta is very special for me because of its everything, but also Mumbai is very special for me because Mumbai taught Right. me things जो मैं कभी otherwise सीख नहीं पाती. So yeah. सीख नहीं पाते बिल्कुल. The more you Yeah. grow, the more you learn, as they say. So how do we Yes. greet in Bengali? Like itne viewers dekhe, so how do we greet in Bengali? So Like I bhalo think the mashi, normal you can just say কেমন আছো, like how are you? kemon acho. Okay, so Yes. kemon acho, guys. We have the Kanya Ghosh with us. Yeah, that was আমি a ভালো pretty আছি. So you learned stuff. reply saying আমি ভালো আছি. Ami bhalo achi. Okay, so I learned Yes. two new things. Two Kemo lines. bhalo achi. Yeah, kemo bhalo কেমন achi. আছো? And কেমন আছো and Yes. আমি ভালো আছি. Okay, perfect. Yes. I'll write it down for my future. Okay, as we are seeing, after this lockdown, many of the Mm-hmm. artists and many of like painters and home decorators and bakers, they have come online. They have chosen this Yes. online platform. Yes. So, what Yes. is your opinion, like that impact COVID-19 is having on our entertainment industry? So, what is your Yeah. views on it? Like, is it good? Is it bad? Is it okay? Should See, we continue with this? हर चीज का ना आई फील आप पानी भी पियो, अगर बहुत ज्यादा पी लेते हो तो इट इज बैड, और Uh, बहुत कम पीते हो right, तो इट इज बैड. मॉडरेशन right. एवरीथिंग इज गुड. सो इट्स अमेजिंग दैट डिजिटली वी हैव ओपनड अप. आज देखो मैं यहाँ बैठ Hmm, के आई कैन एंटरटेन समवन इन अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी आई कैन एंटरटेन. उसके लिए ना मुझे hmm, इमिग्रेशन वीजा कुछ नहीं चाहिए. आई कैन सिट हियर एंड अपने right. देश में तो ऑफ कोर्स. So that is a great advantage and we should be quickly Hmm, learning to adapt to this. You know, जो जल्दी से right. इसके साथ adapt कर सकता है उसका that person is going to break through. And so I think it is great. I'm going to look at the positive side. I don't want to complain कि ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है. Yes, money is an issue. That's why I brought that topic up. But I think Yes. ultimately everybody will realize that अगर हम लोग चावल और दाल और everything online मंगा रहे and we are paying for it, then entertainment also we need Right. to pay. You Right. know, I and guess once this digital things come in a flow, like अभी तो ये बस एक initiative start किया गया है लोगों की yes, organizers की तरफ yes, से. But if once we take this platform on a serious note, हाँ, then I guess हाँ. there must be some outcomes to pay the artist as well. I guess Absolutely, absolutely. And I feel that whether that could be government only also like has to huh, consider this, and this everybody has to right consider this. as a work platform, basically not just the Yes, entertainment platform, but as a work platform वर्क moreover. प्लेटफॉर्म जिसमें हम Right. Right. एंटरटेनमेंट एज अ सर्विस ऑफर करेंगे. तो Right. आई थिंक एंड प्लस दी आर सोशल मीडिया पेजेस आर ऑलवेज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट. हम हमेशा फ्री में तो Right. देते ही रहते. नो अदर प्रोफेशन ऑफर्स एनीथिंग फॉर फ्री. इफ यू गो टू इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके कहीं पे भी यू विल नॉट गेट एनी सर्विस फ्री. आर्टिस्ट आर एनीवे गिविंग थिंग्स फॉर फ्री. So it is very Right. important that entertainment is looked upon as work. So I think digital revolution is here to stay, and let's make the best of it. Instead of thinking कि अरे Hmm. क्या करेंगे, let's be positive and let's make that positive vibe spread everywhere, and let's Right. make music online completely. Let's make music online. That is more important. Yes, Let's yes, yes, entertain people online on our work yes, basis rather than that yes, entertainment basis. yes, Perfectly yes, fine. absolutely. I guess the government will look after this, and all the viewers who are out there will also look after this. Okay. Absolutely. So, Kanya, as we all know, you being the outstanding singer, performer, as we are seeing you live on TVs and on shows. But no one knows the little girl, the little child, behind this Sukanya Ghosh, behind Yeah. this performer Sukanya Ghosh. So how would Yeah. you describe about yourself? Like your little journey from Calcutta to Mumbai, how you got all this? See, जब मैं कलकत्ता में थी ना, अच्छा, let's say when, as you said, little child, जब से I remember any memory, like first Hmm. memories, as you can say, तब से I was doing two things, singing and dancing. मतलब वो Hmm. just था
मेरे अंदर. तो अच्छा. as I grew up, I learned piano and I हम्म. learned singing. बहुत बाद में मैंने सीखा. Why? Because I used to हम्म. stay away from जो normal singing teachers. मुझे बहुत boring लगता था कि यार क्या यार वापस वो Right. सारे गामा कराते. So it was a very All good. rebel attitude I had. My parents were like, नहीं हम्म. singing अच्छा करती हो but तुम्हें सीखना पड़ेगा. But I used to like Right. run away. ठीक है. मेरा हमेशा एक बहुत ज्यादा क्रिएटिव थॉट प्रोसेस था, तो मुझे मैं बोर हो जाती थी. सो आई वुड either do dancing or playing piano. So I learned Kathak हम्म. dancing and I used to do Okay. piano. But धीरे That's as I nice. kept singing and as I kept winning school contests, college contests, I realized that yeah, I have to learn properly. And finally I found a beautiful amazing teacher who trained me with a style जिसमें मैं बोर तो होती ही नहीं थी, इतना मुझे चैलेंज करते थे वो, that I learned so many different styles of music. So Oh. मेरा listening भी वैसा हुआ है, like I've listened to कहीं भी कोई भी, as long as it is music and it is good music, I'm listening to it. It's मुझे कोई genre Right. से कुछ वो नहीं है. I can listen to everything. तो ऐसे करके grew up and I did masters in computer science in Calcutta. तो ऑब्वियस चीज है कि आफ्टर कंप्यूटर साइंस मास्टर्स आप आईटी जॉब ही करोगे. सो और करोगे, म्यूजिक fact है. साइड में रखोगे पैशन के हिसाब से. बट आई वाज हेल बेंट, मुझे करना है म्यूजिक. सो मैंने ना वो इंटरव्यू ही आई डिडंट इवन गो फॉर द इंटरव्यूज, मैंने फॉर्म ही नहीं फिल अप किया. सो एवरीबडी वाज शॉक्ड, इसको क्या हो गया. आई वाज गुड इन एकेडमिक्स बट आई डिडंट. सो आई वेंट इनटू म्यूजिक राइट आफ्टर. At that same time जब मैं कॉलेज में थी, already I was getting a lot of offers in singing in films. I was Right. hosting a TV show which was a music show which was very popular Calcutta में. So Right. people knew Right. me, I was singing. So I was like job कौन करेगा यार, छोड़ो. So Exactly. then I took up a full singing career and like luckily money was also coming, so I didn't feel कि you know I'm losing anything, so I kept singing. इसके बाद I got 3 awards for my singing in films in Calcutta. So including That's the nice. Mirchi Music Award, Whistling Woods Award and ETV Award. So those 3 Awards are awards actually very important for the motivation, I guess, to हाँ, keep you I mean encouraging. Yeah. absolutely. At the end of the day, see, of course awards don't define us, but somewhere it plays on your mind कि चलो you've reached some level. At least, तो we are on the right track. You know, we are track, getting something in the exactly, average. We are getting awards, and we are on the right track. We just have exactly, to improve ourselves more and to work more harder on it. Yeah. So it's absolutely. very important. It's important. So ऐसे करने के बाद, so I moved to Mumbai. But Mumbai आने के बाद there was a difficult period in my life जब मैंने ना I lost my voice. I couldn't sing. And my doctors couldn't understand कि क्या करना है. तो they just gave up after a while. सारे medicines कुछ नहीं work कर रहा था. So ultimately I recovered my voice completely based on my spiritual practice and composing music. उस टाइम मैंने म्यूजिक composition स्टार्ट किया. So इसलिए मेरे बायो पे Wow. आपको मिला So होगा you कि didn't let your composer. negative things fall you Yes. down. नहीं, You it found was something positive. एब्सोल्युटली. लेकिन बहुत दिनों से मैंने डिप्रेशन, एंजाइटी सब कुछ के अंदर मैं उसके अंदर थी. बट Right. समथिंग इनसाइड मी, लाइक मैं हमेशा बोलती हूँ डिप्रेशन एंजाइटी ये सब माइंड में होता है. बट आपका Mind जो में ह्यूमन होता है. स्पिरिट है, जो आपका सोल है ना, उसमें कभी कोई डिप्रेशन नहीं आ सकता है. यू नो, Yes. सो इफ So यू you have to फाइट work विद योर hard on your सोल, heart, on yourself, inner soul, and then सोल, you can come सो over योर all those stuff. माइंड पे Yeah. जितना भी डिप्रेशन हो, आप अल्टीमेटली माइंड आपको छू नहीं सकता है इफ योर सोल इज स्ट्रांग. It's So I was strong and soul happy. level पे, Right. yes, soul level पे I was very convinced कि भाई मैं normal job नहीं लेने वाली हूँ. I will make a career in music. I will I make a will, yes, comeback. I will work hard. बस. Right. तो ये That's the बोलना spirit, अभी, and this spirit is very important, you know. yes, yes. तो ये बोलना बहुत आसान है, but at that time बहुत every day I was आसान है. waking up crying. I would just be in a palpitation होते थे. So but Depressed still, and कि अब क्या yes, होगा, कैसे अब होगा, क्या होगा. and all और those मैं things. इस चीज के बारे में आई नेवर हाइड, आई टेल एवरीबडी ओपनली, बिकॉज मुझे लगता है कि यार हर आर्टिस्ट को ये कभी ना किसी फॉर्म में होता है. मेरा फॉर्म फेज ये था होता कि है, मेरा वॉइस ही बिल्कुल. नहीं था. So ultimately I recovered my voice after 2.5 years. Okay. And 2.5 imagine, years, such a long yes, time. yes.
So उस मतलब टाइम पे यहाँ 2 महीने में लोग डिप्रेशन में चले जाते yes हैं, yes and 2.5 year, like such a long time. It's the great thing you is managed and you came up. Yeah, या मैं डिप्रेशन में थी बट डिप्रेशन couldn't stop me. This is what I want to tell all artists कि देखो अभी जो all the लॉकडाउन artists. चल रहा है, अभी जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, everybody is scared. बट आर्टिस्ट का क्या अमेजिंग पावर है. वी हैव आर्ट से बेटर Right. म्यूजिक मेडिसिन नहीं है. नहीं होता तो है, नहीं बिल्कुल. है. तो आपके पास म्यूजिक हो, डांस हो, पेंटिंग हो, जो भी हो, आपका आर्ट फॉर्म हो, सो इफ यू हैव आर्ट यू हैव द बिगेस्ट मेडिसिन. कोई एंटी डिप्रेसेंट कैन नॉट वर्क एज वेल एज आर्ट फॉर्म्स. तो इसीलिए उस टाइम मैंने अपना दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया विच इज अबाउट कॉन्शियस म्यूजिक, वेयर आई क्रिएट म्यूजिक कॉन्शियसली फॉर मेकिंग पीपल्स मेंटल हेल्थ बेटर. तो वो मेरा दूसरा ब्रांड है. Oh, सो दैट इज जस्ट इमेजिन, मेरा वॉइस जब खराब हुआ तब मुझे ये अलग टैलेंट्स मेरे अंदर दिखने लगे. कॉम्पोजिशन का, म्यूजिक प्रोडक्शन का. आई लर्न right, म्यूजिक right. प्रोडक्शन कंप्लीटली ऑन माय ओन. सो मेरे जितने भी फिल्म्स में आई हैव पुट म्यूजिक, शॉर्ट फिल्म्स हो या फीचर फिल्म्स हो, आई हैव नॉट जस्ट कंपोज बट आल्सो टेक्निकल जो म्यूजिक प्रोडक्शन का सिस्टम है, Right. All the एवरीथिंग आई डिड technical term, ऑन माय yeah, ओन, on on your my on own, your own. without That's any amazing. formal training. So the point I'm trying to make is खराब टाइम आएंगे but we just have to fight. We don't Fight. stop. We just And have to fight, ultimately, and we just have to know ourselves more, what we are good yes, in, and what we can come up with new ideas or yes, new. new एक ventures. एक Right, दरवाजा right. बंद हो गया है मतलब ये नहीं कि हर तो दरवाजा दूसरा बंद हो खुल गया. जाएगा. दूसरा Right, खुलेगा बट very true. आपको जाके खोलना पड़ेगा. You cannot sit and say खोलना कि पड़ेगा, क्यों आपको नहीं खोला. पहचानना पड़ेगा उसे. Right. यस. तो अगर उस टाइम मैं नहीं पहचान पाती मेरे अपने टैलेंट्स को तो फिर मैं उधर ही आई वुड हैव बीन यू नो जस्ट Ended yourself व्हाटएवर. and your career. या या Right. या I या can understand. एंड देन नाउ माय सिंगिंग इज बैक, माय वॉइस इज बैक. अब मेरे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बॉलीवुड का परफॉर्मेंसेस एंड ऑल दैट, प्लस मेरा दूसरा ब्रांड जिसमें मैं कॉन्शियसली म्यूजिक बना रही हूँ फॉर मेंटल हेल्थ, वो भी चल रहा है. सो 2 things are running parallelly and I'm composing music for films. So all this package I've made out of myself would not have been Yes. possible अगर मेरा वॉइस खराब नहीं होता. वॉइस खराब हुआ था Right. इसीलिए आई कुड वो फाइंड कहते हैं ना कि जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है. So just welcome it and वेलकम get something new out of it. Yeah. यस अब आप एक चीज को सोच के बैठ के रोने लगो कि ये क्या हो गया, I cannot do anything, so it will obviously get over your head and you will eventually end up doing nothing. So उससे better है, don't let it get into your head, just calm yourself, Absolutely. work on Absolutely. yourself and come up with a new blast as you did. Totally. So yeah, New blast. Yes. that's amazing. बिल्कुल. Yeah. That's fabulous. So Yeah. as आपने कहा कि Bengali music में you were there for quite a long time. So any your favorite Bengali song which you want to share with your viewers? Can you like sing for us your favorite Bengali song? Though I don't know Bengali, but I'll try to get it Okay. into my तो head. मैं गाना गाती हूँ जो I sang. So I sing this as a mashup. ये हिंदी भी है और बंगाली भी है. So first I will start with the Hindi song, which is a famous song. आप भी गा सकते हो मेरे साथ. And I'm telling all the viewers, sing along with me. Let's pull up our Please. mental Anybody health. who is out Let's there feel and better. who is like who are there for music, who are there for love of music, so please. यस यस. एंड इसके साथ मैश अप करके मैं अपना एक बहुत फेवरेट बंगाली फोक सॉन्ग गाने वाली हूँ. आपको पता है बंगाल में फोक म्यूजिक इज लाइक ह्यूज. बहुत ज्यादा आई थिंक famous है ये. एवरीवेयर इन इंडिया वी हैव ग्रेट फोक म्यूजिक. बंगाल फोक म्यूजिक हैज इट्स ओन स्टाइल. तो उसमें थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अलग है. तो मैं दोनों वॉइस में गाऊंगी, एक हिंदी में और एक, सो you'll see a voice modulation. ठीक है? Voice modulation. That is very important for all the viewers who are out there to see that voice modulation. Yes. नहीं मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, बट थोड़ा सा कर रही हूँ. Yes, we are most welcome. चलो, let's start it. Okay. आई मैं तुम्हारी नजरों की अनजानी एक नाम से, लाई मैं तो लाई बहारों की अफसाने दीवार से. तारा मुझे छूना दूर ही रहना, परी हूँ मैं. Beautiful. आए कोई मेरी पनाहों में ले जाए नजारे, देखे कोई मेरी निगाहों में पहचाने इशारे.
ओ नाना मुझे छूना ना दूर ही रहना परी हूँ मैं परी मोनो दे हूँ सोई बन मैं। दे दुट्टो दाना लगाई दे मोनो दे सोई बन दे दुट्टो दाना लगाई दे Wow. मोनो दे सोई बन दे दुट्टो दाना लगाई दे मोनो दे सोई बन दे si পাখি একটাও পাখি পেড়েতে পাখি দুটো ডানা উড়ে যায় ও si পাখি একটাও পাখি পেড়েতে পাখি দুটো ডানা উড়ে যায় তো ডানা উড়ে একটু ডানা মন বটে অন্যটি সুই বন হে মন দে সুই বন দে দুটো ডানা লাগাই দে মন দে সুই বন দে দুটো ডানা লাগাই দে फूलों में जो नूर है मेरा ही सुरूर है आंखों में गुरूर है ख्वाबों का कसूर है Wow. कोई तो ऐसा हो सांसों को मेरी महका जाए आई मैं तो वही नजरों के अनजाने परी आई मैं तो लाई बहारों के अफसाने दीवार से नाना मुझे छूना ना तो नहीं रहना परी हूँ मैं परी हूँ मैं परी हूँ मैं मुझे न छोड़ना परी हूँ मैं beautiful class. Like I can clap on you with one hand. Thank That you, was thank you. lovely. Okay. Thank you. I guess all the birds are here after listening to your voice. But मैंने earphone लगा रखे तो वो कैसे सुनाई दिया? I really loved the voice that you changed when you were singing Bengali. You know that bit hard voice like It's a raw हमारे voice, Bollywood yeah. में. हाँ, right. Like usually female singers की voice बहुत पतली होती है when they sing it, like they come into Bollywood वो बहुत पतले Yeah. उस voice में गाती हैं, but when you were into Bengali music your voice got bit hard, like which Yeah, I like yeah. the most. मुझे मतलब वो Yeah. आवाज में एक भारीपन सा था. So that's Yeah. how people would know Actually, कि folk पतली आवाज music और आप भारी आवाज अलग होती है. एब्सोल्युटली एंड फोक म्यूजिक पता है आप दुनिया के कोई भी फोक म्यूजिक देख लो कहीं से भी यू विल सी द फोक म्यूजिक हैज अ वेरी अर्थ टोनैलिटी मतलब मिट्टी के गाने जो बोलते हैं लाइक यू नो लाइक रियली Right. फ्रॉम द कोर और उसमें कोई बनावटी नहीं है देयर इज नो नहीं ट्राइंग टू बी होता. प्रिटी इट्स जस्ट व्हाट इट इज आप जो फील कर रहे हो वो एग्जैक्ट निकलता है तो मैंने ना बहुत Right. तरीके के वॉइस स्टाइल्स आई हैव लर्नड एंड डेवलप्ड so in Calcutta that was what I was known for like I was the only person who could sing Arabic style of voice जो Middle Eastern style होता है Wow. I was the only person who was singing in Spanish फिर Bengali folk फिर of course Bollywood is always there but Bollywood का एक अच्छा thing the thing is that Bollywood has always welcomed different styles Right. कुछ सालों Right. पहले Right. जब हिप हॉप कुछ था ही नहीं तब नहीं था but when नहीं था. hip hop आया तो it came so like that Punjabi came. music came then Bollywood has been open to many different styles so that is Many a good different thing. styles and many different music, right? Yes As so we can see, Rajasthan folk music is also there. Hip also hop is there also yeah there, yes right? Now yes Bengali folk is also there, yeah like. yeah I So feel just Bollywood कभी इसको Bollywood ना now नहीं बोलता needs basically. ना नहीं बोलता बट ओनली थिंग इज ऑफ लेट इफ यू नोटिस बॉलीवुड में थोड़ा सा ज्यादा एक ही टाइप का हो गया है वी नीड टू ब्रेक दैट टुगेदर वी ऑल नीड टू यू नो ब्रेक दैट Yeah, I was coming down to this. I had this another question with me, जैसे हाँ हाँ कि although ये question थोड़ा बाद में आता, but now as you have नहीं नहीं said कि बोलो Bollywood में अब एक ही स्टाइल आ गया है. So हाँ now we are हाँ seeing more of remakes, you know, पुराने या गानों का या रीमेक आने लगा है या अब. अब या मतलब जो ओरिजिनल म्यूजिक है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खत्म होने लगा है, and people are coming up यस with the older new versions, हाँ old songs के new हाँ versions के साथ आ रहे हैं. हाँ So what is हाँ your opinion in that? Is it right? Is it wrong? Is सी this okay? दो Like ऐसा पॉइंट है होना ये जो चाहिए? remixes हो रहे हैं this is a business mechanism this has got nothing to do with Hmm. music and it also shows the fact that वो गानों को हम अभी remix कर पा रहे हैं means
the credit of the composer of that song जिसको हम remix कर रहे हैं, that Right. that song is good. That is why आप जिस format में भी उसको गाओ, खाली गला गाओ या पंजाबी ढोल डाल के गाओ या hip hop beats डाल के गाओ, हाँ. still the melody is the king. Right. Michael Jackson बोलते थे कि melody is the king. So that is King. one thing. Second thing is, see, this is a business mechanism. So it's not that Bollywood में original गाने नहीं बन रहे हैं, but वो गानों को कोई promote नहीं करता है, because नहीं करा. Always the companies feel that audiences will react more to remixes because they just want a dicture beat, right? But आज देखो जब हम lockdown पे है, so we are listening to this kind of acoustic music. मेरे पास कोई tracks नहीं है, I'm just singing with a piano और खाली गला, आपको अच्छा लगा. I'm sure some people in the audience also might have liked them. This is real music where the melody and the singing is clear. And I'm not against hip hop music, I'm not against remix music. I'm just saying सब कुछ का एक balance रहना चाहिए. As I said, आप पानी भी बहुत ज़्यादा पियोगे तो your kidneys will get हाँ, तो वो भी नहीं अच्छा है, right? Moderation. आज अगर ऐसा होता कि नहीं, as we are saying in lots of movies, you know, अभी जो movies बन भी रही हैं, वो movies भी या तो remake की जा रही हैं या फिर जो गाने यूज हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं से रीमेक हो रहे हैं. मूवीज में, बॉलीवुड में भी वो गाने रीमेक हो रहे हैं. That is, they are giving the excuse कि audience को remake चाहिए, but I don't think so. Remake चाहिए. Audience को actually हमेशा original music चाहिए. अगर मुझे किसी से बप्पी दा के कुछ गाने पसंद है, I will go and listen to the original song. Like I'm giving you an example. Like suppose I want to sing मेरे दिल गाए now I want to listen. This song, first of all, you don't need any music. कोई भी गाए आप डांस करना शुरू कर दोगे. Secondly, ये गाना you don't care about remix. You will be more attached to the old version of the song. Fine, but the thing is, आपको you have to see there are so many talented composers. आप उनको use करो. Like young people, forget me, I may be good or bad, I'm not talking about myself, but I'm just saying there are umpteen number of amazing artists across India. आप folk songs उठाओ कहीं से भी, like Bengal से ले लो, राजस्थान से ले लो, South से ले लो, इतने अच्छे folk songs है. There are so many good young composers. I would say that you know, we need to all come together and stand up against this instead of waiting for a big record label to change their mindset. As artists, we need to make a change in our mindset. क्योंकि उनके ऊपर depend करेंगे like तो. Now, me being an anchor, हम stage shows करते हैं, जाते हैं, and we interact with empty number of people, you know, like बहुत से लोग होते हैं. तो usually अब क्या हो गया कि आज एक वो hip hop या का जो टाइम था, लोगों ने वो पसंद किया, लेकिन वो चला गया. Just a second. लेकिन वो टाइम चला. So now what people are looking for कि कुछ नया म्यूजिक आए, ओरिजिनल आए, सोलफुल म्यूजिक आए, भले वो फोक क्यों ना हो या कुछ ओरिजिनल आए. Like people are now done with the remake. Yeah. Yes. Actually. And we really need to stop playing safe कि अरे उसका रीमेक सक्सेसफुल हुआ तो हम भी रीमेक डालेंगे अपने फिल्म में, फिर तुम सोचोगे मेरे फिल्म में मैं भी. This is playing safe mechanism. और क्योंकि being the audience mindset, जब भी रीमेक गाना चलता भी है ना, हम उस रीमेक गाने में भी उसका ओरिजिनल वर्जन ही चलाते हैं दिमाग में. हम वही सोचते हैं और हम बस बीट्स को लेकर डांस करते हैं. बट यू नो, टू बी ऑनेस्ट, बीट्स भी जो आज निकल रहे हैं, दोस बीट्स आर वेरी बैड फॉर योर मेंटल हेल्थ, इफ यू आस्क मी. इतने अग्रेसिव साउंड्स है ना, वो अग्रेसिव साउंड्स विल एनीवे पीपल आर फीलिंग वेरी एंग्शियस इन देयर नॉर्मल लाइफ. आज लॉकडाउन के बाद तो और भी. कैन यू टेल मी वन पर्सन जो लॉकडाउन में बैठ के कोई टिपिकल आइटम सॉन्ग सुन रहा है? यू टेल मी वन पर्सन. No one, even me, सुबह उठ के या तो मैं कव्वाली सुनती हूँ, गजल सुनती हूँ या फिर पुराना कोई म्यूजिक सुनती हूँ. I'm not listening hip hop at all. नहीं, एंड हिप हॉप में भी देयर इज गुड म्यूजिक जो आप सुन सकते हो, वर्ल्ड इंटरनेशनली है. तो आप अच्छे म्यूजिक को सुन रहे हो, मैं भी सुन रही हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज वी आर आर्टिस्ट. एंड आई एम टेलिंग यू, फ्रॉम माय मॉम, माय डैड टू माय फ्रेंड्स टू एवरीबody I know, everybody is whatever they are listening to is something soulful. कभी वो लिंक भेज रहे, अरे ये गाना हम लोग कॉलेज में सुनते थे, कितना अच्छा था ना. Like even now a song from Euphoria say मायरी याद तू आई भी. Anytime you sing that song, that's it. तो फिर क्या पॉइंट? Nowadays these are my favorite song. Even अल्ताफ राजा, तुम तो ठहरे परदेसी.
You know, I'm Yes, thinking like these are on loop. These are on loop on basically loop. for me. तो फिर And मतलब क्या especially हुआ, Lata ji's Lag Ja Gale, all लग time जा गले. favorite, all तो time favorite. हम जो ऑडियंस को हमेशा ब्लेम करते हैं ना कि नहीं ऑडियंस को ऑल दैट सिर्फ वो बीट वाले गाने ही पसंद है, दैट्स नॉट ट्रू. नहीं ऑडियंस है, को नहीं, एक्चुअली exactly, अच्छा गाना exactly. ऑलवेज पसंद है. सो जिसके Right. हाथ में पावर है, दैट पर्सन नीड्स टू मेक अ कॉन्शियस चॉइस Should कि take व्हाट the एम आई गोइंग टू. initiative. Right. या, Right. so that's what I Exactly. feel, Very that's true. my opinion. I hope I didn't Like, offend this is anybody, but that even if that I is why I did, like, asked this question it's my because honest मुझे लगा था opinion. कि सिर्फ मेरे मन में है सवाल, but इसीलिए नहीं पूछा. यार, I thought just to मैं ask बोलूं it. हर हाँ. सिंगर के मन में यही पॉइंट है, हर म्यूजिशियन के मन में. आई एम इन टच विद सो मेनी पीपल, एवरीबडी इज सीइंग द सेम डैम थिंग यार. ये सिर्फ Right. तुम और मैं नहीं है. आई थिंक ऑल आवर ऑडियंस, वी कैन इनफैक्ट रिक्वेस्ट देम, आप लोग प्लीज कमेंट में शेयर कीजिए सो दैट वी गेट थोड़ा, वी फील Sure. थोड़ा बेटर. प्लीज कमेंट एंड लेट अस नो हाउ यू फील अबाउट दिस ट्रेंड. Are you Hmm. listening to remixes right now, or are you listening to soulful songs? Hmm. Right. Okay. One of the viewer commented that okay, they are saying two Geet starts together. Okay. Like एक ने comment किया है two Geet together, like me Geet and you as a singer Yes, Geet. singer. Yeah, absolutely. So two Geets together. Okay. So just tell Yes. me about your first playback song which you did, तो if you remember. कलकत्ता में फर्स्ट प्लेबैक है और मुंबई में भी फर्स्ट प्लेबैक है. दोनों कलकत्ता का दोनों. मैं दोनों बताती हूँ, ठीक है. कलकत्ता का फर्स्ट हाँ. प्लेबैक था एक बंगाली गाना, एक फिल्म में, विच वाज अ फोक सॉन्ग, बट so the film had Mithun Chakraborty and it was a big film, but now Oh, that oh. folk song ka they wanted a unique style of singing. तो Hmm. at Hmm. that time Calcutta में everybody knew that Sukanya is capable of doing crazy things, so let's call her. जब भी Right. उनको कुछ नया चाहिए था, they wanted Sukanya. हाँ. So I went जब भी and मसाला चाहिए तो कन्या को मसाला, बुलाओ, हाँ हाँ कुछ हाँ, चटपटा जब चाहिए तो नॉर्मल कन्या चाहिए को किसी बुलाओ. और को, बट हाँ चटपटा. So they, you won't believe, like I just went into the studio and music director Debojyoti Mishra, he's a very very famous and well known music director in Bengal. So he just trusted, he said you just go and sing, and I thought they were Hmm. ऐसे रिहर्सल करवा रहे हैं. So I was हाँ. just trying it out, ट्रैक चल रहा है, मैं कुछ इधर उधर गा रही हूँ, and then suddenly he says बाहर आ जाओ. बाहर आ, मतलब बहुत खराब गाया मैंने, क्या हो गया? And he said हो गया. I said क्या हो गया? I was rehearsing, now let me go and sing. He's like, listen, I know what I'm doing, अब आप सुनो what you have Yes. sung. So I realized कि यार वो ही take सही था, like that was how it is. And that was my Bengali first playback. And the second playback was, I'm mentioning the second playback because the second playback got me my Mirchi Music Award. It was a Spanish Bengali song. Bengali film का Oh, Spanish theme Bengali song. song. Yeah, so it was the first time a Spanish Bengali song had been created. और उस time Senorita बहुत चल रहा था. So Right. I Right. created something, and Spanish lyrics मेरे ही लिखे हुए. So that song got me that award. And Mumbai Can आके you just I sing sang. sing that song for the viewers? क्योंकि Uh, मैंने वो song नहीं सुना है personally. एक second, I'll sing. One second. De la nada sale todo, el todo si hace nada. Oh, hela pela, holka, ador, khela khela, polka, bali ghar. Hela pela, holka, ador, khela khela, polka, bali ghar. De la nada sale todo, el todo si hace nada. So that was the idea of the Beautiful. song. You were singing और मंदिर में salsa कर रही थी इस गाने पे. Very good, very good. Without partner. Yeah. तो फिर मुंबई आने के बाद I got like the biggest shock of my life, when pleasant shock जिसको बोलते हैं, when I got a call रात 12:30 बजे कि there is a song, आपको गाना है, आपको आपकी वॉइस को ट्राई करेंगे, इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, इंग्लिश हिंदी है. सो उसमें 2 लाइन इंग्लिश है, नहीं एक ही लाइन इंग्लिश है, व्हाट अ फीलिंग. तो I said हाँ इंग्लिश में really प्रॉब्लम नहीं है, I can sing. So they said ठीक है, you come. So I checked, I went to the studio and I sang, and at that time my voice was starting to give me trouble. तो मेरा वॉइस जो प्रॉपर लेवल पे था, होता था, वो नहीं निकल रहा था, बट स्टिल आई सैंग एकदम दिल से. सो
I just left and they said that I of course didn't tell them कि मेरा voice अभी आप जो सुन रहे हो वो मेरा original वो नहीं, level हाँ पे नहीं नहीं of है, course I can't tell them because then they'll think कि obviously. but you know what the director started saying, the music director said that I love this tonality in your voice, इतना अलग है, मुझे यही चाहिए. And I was like, Wow. okay, I should shut up and go home and not say anything. So then he said, but see, I Right. like it. I don't know if Shekhar Sumanji will like it or not. So we'll wait. So then the next day, Shekhar Sumanji called and told us that he approved of my voice. And that was in the film called Heartless. And the bigger shock was that the opposite voice was Mohit Chauhan's. So I Wow. was like a die-hard fan since childhood. मतलब हम डूबा डूबा Same गाते here. गाते बड़े हुए हैं. So when you are Right. singing with that person who you have loved with all your heart, I even had a crush on him and in his musical voice. So I was like, यार Right. Mohit Chauhan, Mohit Chauhan, Mohit Chauhan. So I sang Mohit that Chauhan, song बिल्कुल. and it was a very beautiful combination. मुझे डर था कि उनके voice के साथ मेरा tonality कैसे match होगा, but actually because my voice was not एकदम perfect, voice में जो हल्का सा हस्क आ रहा था, that actually worked with his voice really well in my opinion. If you hear the song, you Wow. know what I'm saying कि उस time वो Right. voice का texture was perfect for that. So I think what happens is So always good for us. as we earlier said ना कि negative चीजों में से भी positive निकलती हैं, Yes. and you should Yes. never lose hope. Yeah. Never, जो भी never, होता है अच्छे never. के लिए होता है. So this is the Yes. second time ये चीज fact साबित हुई है with you. Absolutely, So absolutely. which song was it? Your first playback Bollywood song with So Mohit I'll Chauhan. sing it 4 लाइन में गाती हूँ, ठीक है? So हाँ, it's sure. like हाल दिल की शब पे चल कर आ गई हूँ तेरे दिल तक, what a feeling, धड़कनों की शब पे चल कर आ गई हूँ तेरे दिल तक, what a feeling, तेरा मेरा मेरा तेरा जरा 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 डरा सा इश्क आया तेरे दिल तक, what a feeling, what a feeling. Feeling. Whoa, oh, what a feeling. What a feeling. What a feeling. Whoa, oh, what a feeling. Oh, ba-da-da-dee-da-dee-da. Ba-da-da-da-dee-da. Ba-da-da-da-da-da. Ba-ba-ba, yeah. Ba-da-da-dee-da-dee-da. Ba-da-da-da-da-da. Ba-da-da-da-da-da. Ba-ba-ba, yeah. Thank you. Beautiful, beautiful. You know, you Thank don't need you. any instrument or anything to sing. Your voice is so melodious. You just go in a flow. मतलब बिना Thank you. किसी Thank चीज you. के भी. Okay. He's here to I'm say getting hello. Okay. appreciation. I'm getting appreciation from him. Yes, I guess so. Yeah. Okay. नहीं यार, I think जो लोग भी दिल से गाते हैं ना, उनको I really feel people who sing with their heart, they don't need anything. कल अगर माइक खराब हो जाए, Right, right. साउंड सिस्टम खराब हो जाए, हाँ. सब और खराब लोग हो जाए, सोचते हैं कि माइक अच्छा नहीं है, हमारी आवाज अच्छी नहीं आ रही, हम गा of नहीं पा course रहे वो हैं. टेक्निकल चीजें इम्पोर्टेंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे साथ ऐसा हुआ है कि शो में कभी कोई मॉनिटर नहीं काम कर रहा है और आप बोल रहे हो साउंड इंजीनियर को, हाँ. उसको समझ नहीं आ रहा है. समझ अभी नहीं आ रहा है. इन इयर्स के टाइम पे भी कुछ ना कुछ झमेला कभी ना कभी तो हो ही जाता है, कितना भी हम टेक हो ही राइटर जाता है, भेजते fact है. हैं या एंड ऑफ कोर्स द क्लाइंट डजंट अंडरस्टैंड कि कितना ट्रबल होता है एक सिंगर को, बट होता है. इन उनको तो दोज बस ये लगता है मोमेंट्स कि आर्टिस्ट, हाँ, वो आर्टिस्ट को ब्लेम करते मतलब हैं वो एट द एंड. अच्छा वो बेसुरा गा रही कैसे, मतलब शी इज बैड और ही इज बैड, हम ऐसे बोल देते हैं. राइट So that is not fair because technically it's important, but at that time मैं अपने आप को ऐसे ही encourage करती हूँ कि यार मैं दिल से गाना गाती हूँ, म्यूजिक कम्स फ्रॉम माई हार्ट, इट डजंट कम फ्रॉम माई माइंड. तो इफ इट कम्स फ्रॉम माई हार्ट आई विल सिंग नो मैटर व्हाट, एंड मैं लोगों के दिल को छूंगी एंड नोबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम, नो मॉनिटर, नो साउंड राइट. नो माइक, नथिंग. एग्जैक्टली. nothing will stop me from touching your heart. अगर मैंने decide किया है आज I'm going to sing for you, then my heart will connect with your heart, full stop. There is nothing in between. Nothing in between, right. Yeah. And that should be there. ये एक बहुत अच्छी बात है कि हाँ, अगर हम एक आर्टिस्ट हैं, being a singer or being anchor or being anything, there should be nothing जो आपको किसी चीज को नहीं रोक दे. It's very important. Absolutely. Okay. So moving on to this another question which seems to be very interesting for me actually, and it's written here that your other identity,
your other identity as Gina at Talba. What is this Gina Yes. at Talba? So मैं आपको बता रही थी कि when I was not mentally ill and I was not being able to sing, उस टाइम पे जो Right. 2-2.5 साल एक्चुअली पूरे हाँ. टाइम में आई वाज स्ट्रगलिंग विद मेंटल हेल्थ. इतना खराब हो गया था मेंटल हेल्थ मेरा दैट आई नीडेड अ मम्मा आंसर. डोर क्लोज कर लो. मम्मा डोर क्लोज कर लो. Okay, I will get him down. चलो. Okay, yeah, sorry. Yeah. We'll So, continue. yes. So, मेरे उस मेंटल हेल्थ को खुद ही हैंडल करने के लिए इनिशियली आई ट्राइड डॉक्टर्स, like trying to Okay. go to psychologists. I could not, I didn't like anything. So I didn't like I somehow didn't find anyone who I could talk to. So I tried only once though. Yeah, only once. And my mom being a psychologist, she tried to talk to me. But कुछ Okay. nothing was working यार. When I can't find my Right. identity, मैं मुंबई में कर क्या रही हूँ? मेरे कर जो क्या रही हूँ, बिल्कुल. बेसिक चीज के वजह से मैं आई हूँ, जिससे मैं काम करती हूँ, वही नहीं है तो मैं हाउ? So this was playing on my mind. Anxiety, depression. So at Right. that time, I wanted a solution which is not based on medicine. And I started music production. अपने आप को जस्ट थोड़ा सा मोटिवेट करके कि चलो मैं सीखूंगी, तो कंप्यूटर खोल के ना ऐसे zombie, you know what a zombie is, no? Like Right, कुछ right. ना हाँ. समझ के like I would just be like let's try this, let's try that. कुछ समझ में नहीं आता था क्या कर रही हूँ. उस टाइम पे आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर साउंड्स. ठीक है, द साउंड्स दैट वुड हेल्प मी हील माय माइंड. और मुझे पता नहीं था कि मैं वो कर रही थी, बट वो हो रहा था. सो आई वुड सिलेक्ट बीट्स, साउंड्स, और बिकॉज आई कुड प्ले द कीबोर्ड, मतलब पियानो, सो आई कुड रिकॉर्ड फ्रॉम माय पियानो टू द. तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड कंपोजिंग ट्रैक्स. एंड देन आई रियलाइज दैट दिस म्यूजिक जो मैं बना रही हूँ, दिस इज हीलिंग मी. ओके, इट्स लाइक मैजिक. आप खुद ही कुछ बना रहे हो, आप खुद ही अपना मेडिसिन बना रहे हो, उस मेडिसिन बना रहे हो और उस मेडिसिन को खा के ठीक हो रहे हो. लाइक यू आर योर ओन मेडिसिन. ठीक हो रहे हो. Medicine. And Very true. I didn't realize this initially. मुझे थोड़ा टाइम लगा. And then I saw कि how is my voice recovering? And forget the voice, my mind was recovering. वो depression खत्म हो रहा था. मतलब अगर दिन में 24 hours I was initially depressed, now I was depressed for only 4 hours. वो chemical imbalance आपको समझ में आता है कि अभी हो रहा है वो depression, but अभी नहीं है. हाँ. You know, नहीं I है. could see that my most of the 80% of the time I was becoming better. और खुद ही. Better. So I realized that what is the reason? So I realized it is the music. And then I started studying about music therapy, music healing, music this, music that. Right. And then I realized that what I was making is genre का मुझे नाम नहीं पता था, because मुझे कोई सिखाया ही नहीं है म्यूजिक प्रोडक्शन, मुझे किसी ने नहीं सिखाया. So I don't know what is what. मैं बस साउंड ऐसे like इनी मिनी माइना मो करके सिलेक्ट करी, जो अच्छा लगता डाल देती थी. I realized this genre of music is called conscious music. Or India mein, there is nobody who is making conscious music. And this Even is a I came to know first time by you that there is some sort of I am music. the first artist of conscious music in India. और कोई नहीं है India में at this point who is the first in this. So I checked on Google and then I contacted some people abroad and I saw कि ये genre exist करता है, but इसमें बहुत कम लोग हैं even internationally. तो इसमें क्या है, all the beats, frequencies, sounds that you select are good for your mind. ये music therapy नहीं है. It's just that hip hop गाना हो सकता है. Even it could be a rock song. It could be a folk song. But as long as जो बना रहा है उस गाने को, उसका conscious intention ये रहना चाहिए कि अगर आप सुन रहे हो तो आपका mind elevate होना चाहिए. So that was the story behind this music. Now I didn't know what to do with this music. I just had it in my computer. मुझे डर लग रहा था कि इसको मैं कैसे रिलीज करूँ, because I'm doing Bollywood stuff. Or you know how Bollywood people आके आप कुछ और करते हो तो they think that you are out of Bollywood. So that is not exactly. true. I'm full on into Bollywood, but the thing is, मैं side में I was also doing this. Ultimately 2019 last year, एक दिन I just said भाड़ में जाए मेरा fear, भाड़ में जाए सब कुछ. I will just release this music and let's see what happens. But I gave myself a new name. It was like giving myself a new birth. तो जीना मेरा nickname है, and Earthiva जो है, जीना Earthiva, JEENA,
EARTHIVA. So I think I can't see you, Geet. Ankit ji, can you just check? Geet, Yes. are you there? Yes, I'm here. Ha, Somehow ha. it got So, disconnected. Yeah. so I got that music released under the name Jeena Earthiva, JEENAEARTHIVA, मतलब अर्थ नीवा. Okay. So ये नाम मैंने क्रिएट किया. अर्थिवा नहीं था, वो मैंने क्रिएट किया. जीना मेरा नाम ऑलवेज था because of my nickname, and I released. उसके बाद से I have got a lot of love and support for this. I went and promoted this in London and Edinburgh, and internationally मुझे बहुत support मिला इस म्यूजिक के लिए. और म्यूजिक में बहुत इंडियन पार्ट्स है, बट इट इज इन इंग्लिश मोस्टली, बट हुक लाइन सब इंडियन या संस्कृत या हिंदी में है या कोई एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज में है. एंड इट्स इंडियन इलेक्ट्रॉनिका, सो आई मेक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक. It's very danceable, but it's also very good for your mind. So Jeena Earthiva stands for that part of me. मेरा एक दूसरा version, एक alter ego कह सकते हो आप. So I guess many viewers who are watching us and they are facing the same issue, you know, depression, breakdowns, and also. Yes. Can you sing one song so that they all can feel a bit relaxed? Yes. क्योंकि ये बहुत अलग version है. Yes. तो मैं जीना अर्थिवा के ट्रैक लिस्ट से एक गाना गाती हूँ. यू कैन फाइंड दिस ऑन स्पॉटिफाई, आईट्यून्स, हर जगह पे. Okay. Wait, I have to just remember. अच्छा, मैं पियानो के बिना गाती हूँ because I don't think I will remember that's right okay. now the chords. मैंने कहा ना आपकी आवाज वैसी इतनी अच्छी है, पियानो की जरूरत नहीं है. Yes. So असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया. शांति, शांति. I've been a mountain climber in the desert. I've been a songwriter off the records. I've been a mirror to the pretty strangers, and I've been a pleader for the drug dealers. I've been a seeker of honest communication. I've been an advocate, I've been a revolution. I've been a voice against selfish salvation, and I've been a prison for your illumination. Asatoma Sadgamaya. Thank you. Beautiful. This is really so relaxing, man. This is really so relaxing. You know, it calms your brain. This is so soulful. Yes. मतलब कभी तो मूड खराब हो, आप सुबह सो के उठो. This is really amazing. And as you said, you can find this. We can get this song on Spotify and I guess on Gaana, Wink, and YouTube everywhere. channel पे जा सकते हो. You can watch, join me on Instagram, YouTube, Spotify, iTunes. Just the spelling is JEENAEARTHIVA, and I'm running a lot of mental health programs जहाँ पे मैं music को use कर रही हूँ for your mental health. So if you want to sign up for any of my programs, please go ahead. I'm always definitely. I guess all the viewers who are out there उन्हें सुन लिया होगा कि yes, because 90% of people they are suffering from the same issue. Work issue होते हैं, love breakups हो जाते हैं, financial issues होते हैं. मतलब चुटकी में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं. You know, like they fall into depression, खाना पीना छोड़ देते हैं. So I guess music is the best healer ever. I would say absolutely. that. And music को सही तरीके से यूज करो तो हीलर बनता है. बताओ, अगर आप अग्रेसिव म्यूजिक सुनो है तो the same music becomes a poison. तो म्यूजिक आपकी न्यूरोलॉजी को अफेक्ट करता है. सो यू हैव टू चूज योर म्यूजिक. क्या सुन रहे हो आप? अगर आप डिप्रेस टाइम पे और भी डिप्रेस गाने सुन रहे हो तो देन यू आर गोइंग टू बी मोर डिप्रेस्ड. More depressed. Very true. So I guess these type of songs are very helpful, like Jeena Earthiva. This is very nice. And viewer had commented, "Wow." Yeah. So I thank you so much everyone for watching. Yes. Okay. So moving on, as there are many aspiring singers जो singing करना चाहते हैं, singer बनना चाहते हैं, जो YouTube का platform choose करते हैं या अपने videos बनाते हैं.
So any tips, any advices for them कि क्या Yeah, करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, how to do it? What is the right yeah. track for all So those I just fresh feel that singers? please differentiate between music and business. When we talk about Hmm. music you should do no matter what. YouTube रहे या YouTube कल डूब जाए, God डूब forbid, जाए, I don't exactly. want that. But I'm just saying, कुछ भी हो जाए, your music should not हाँ, stop. Number one, should not and stop, your right, music का biggest appreciation has to come from you. Number one. Number two, coming to the business right. part, जो हम social media पे या YouTube पे या इसमें उसमें डालते हैं. So I think very important for us to study the algorithms. जैसे हम सारेगामापा Hmm. सीख के गाते हैं, you know, तो we don't just गाते sing हैं, just like that. We have studied music, right, so we are singing, and जो right. जितना अच्छा study किया है वो उतना अच्छा कर रहा है. So if you want to be on Correct. social media, you need to understand कि ये एक subject है. आपको ये पढ़ना Hmm. पड़ेगा how it works. Like I'll give you an example. If Right. you are on Instagram, if you don't put 3 or 4 posts in one day, Instagram's algorithm doesn't make you very visible to others. तो आपके हो Right. सकते हैं 10,000 फॉलोअर है बट उनको दिखेगा ही नहीं आपका पोस्ट unless and until you are an active user. So those are things. इसके साथ इमोशन को आप मिक्स मत करो. एंड ऑल्सो ये होता है कि अगर मेरे पोस्ट को किसी ने लाइक नहीं किया तो आई गेट डिप्रेस. दैट शुडंट हैपन बिकॉज Depressed. Right. इफ पीपल आर नॉट लाइकिंग योर पोस्ट, हो सकता है कि एल्गोरिदम के वजह से आपका पोस्ट दिखा ही नहीं लोगों को. So नहीं very दिखा. important to study the social media algorithms and go full on. Like the people who go to job, they get up at like 7 a.m, go to job at 9 p.m, 7, 9 8, a.m, yeah. come back home Come at 10 back. p.m. So Right. if you are on YouTube, you have to make videos at least twice a week. If you are on Instagram, you have to make content 4 times a day. तो ये काम है. You cannot Right. say कि मैं नहीं करूंगी and then I will say अरे but क्या करे, nobody listens to me. मेरे साथ वो हुआ. Initially कोई सुन नहीं रहा हाँ. था when I started जीना अर्थिवा. कोई नहीं, कुछ नहीं पता था. So then I studied कि यार सोशल मीडिया भी वैसे ही पढ़ना पड़ेगा मुझे जैसे मैंने म्यूजिक को पढ़ा है. So I have Right. to So give it here importance. one of the viewer is asking what was the name of the song that you sing, and I guess So the Saurabh, name वो of the जीना song, अथर्वा, yes. so the name of the Hmm. song is in English. I have been a. I've been a. मतलब have को आपको apostrophe देके लिखना पड़ेगा. I apostrophe VE. I have been a. तो I have been what. तो इसका जो वर्जन है मैंने तो अभी acoustically गाया बट एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक है, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक है. यू कैन डांस टू इट एंड यू कैन गेट हाई And ऑन we इट. can get that on YouTube. Yeah. So I YouTube, guess Saurabh, you Spotify. got your answer. Yeah. I've been a. And you can just type I have जीना been अर्थिवा, आपको सारे सब कुछ मिल जाएगा. डिटेल्स मिल जाएंगे, राइट. सो हु ऑल आर Yes. आउट देयर, सारे व्यूअर्स, आई गेट आपने सुन लिया होगा. And moving on very quickly to this rapid fire round. Okay, this is the most interesting for me. Yes. Okay, let's Yes. start with who is your favorite music director? So many people, but yeah, I mean, A.R. You Rahman, have to Vishal name one. Bharadwaj from India. Oh, very nice. A.R. Rahman is my favorite too. Okay, And your Vishal favorite Bharadwaj. singer? Favorite singer, male and So female tough, both. so tough. ऐसे मत करो. You अच्छा, have to. You have to. Okay, Sunidhi Chauhan and Nusrat Fateh Ali Khan. Okay, नुसरत फतेह अली खान, yeah, he's a nice singer. Yeah. बहुत अच्छा गाते Yes. हैं. उन्हीं के ट्रैक्स आजकल बेसिकली मैं तो सुनती हूँ क्योंकि वो माइंड को बहुत रिलैक्स करते हैं. उनका टोटल म्यूजिक बहुत अच्छा है. Yeah, his life was so amazing with music. Yeah. Okay, and your favorite actor? Okay. मार डालो मुझे. Okay, there are very many favorites. Okay, but yeah, for right now, I'll go to my childhood favorite, Shah Rukh Khan, any day. शाहरुख खान, हाय. शाहरुख खान का कोई डायलॉग ऐसा जो आपको बहुत पसंद हो? मैं कर नहीं पाऊंगी, but it's actually किरण. Yes, all time favorite dialogue. Yeah, शाहरुख खान के was सारे die genius. hard fans को बहुत पसंद है. Yes. Okay, so who is the male singer जिनके साथ आपको डुएट करने का मन हो या सपना हो जो अभी तक आपका सक्सेस नहीं हुआ है? Which male singer you want to work with? See, definitely I would want to work with Arijit. Because you know, when I sang one of my songs in Bengal in one of the films called Bojena She Bojena, he, like, that time he was not what we know him as. He was in Right. Calcutta. He was recording me. Like, he was guiding me Oh. through the recording. And he knows me and I know him. But the thing is that after that, he became so huge.
I feel that Right. why I want to work with him is not because he's huge. I want to work with him because I know that this man has really struggled and really sings from the heart. So that is why I want to work with him, and I Work hope with he's him. listening. Arijit, please, Yeah, I please, hope please to. connect Yeah, me. please, please connect to Sukanya, and please, we are hoping for your Yeah, duet song and after this lockdown I am gets a over. big fan of you as an artist as a whole, not just of your voice, but as a person, as an artist, everything. Yeah. Yes, I am very well. I hope that Ajit would be hearing this after we share it to Yes, our pages. yes, I mean, yes. yeah. We have to make it Okay. reach him. Yes. Hope for the best. Ankit, I hope you are listening. अंकित जी, you have Okay. to make it happen, हाँ. संस्कृति इवेंट से हमको चाहिए ये. हाँ बिल्कुल. Yeah. एंड अभी लॉकडाउन के बाद जो इवेंट होगा बाय संस्कृति इवेंट्स, उसमें ये डुएट परफॉर्मेंस होगा ऑन स्टेज, अजय एंड सुकन्या घोष. Totally. यस, फिंगर्स क्रॉस्ड. ओके, पॉजिटिव सोचने सो में एज क्या दिस, हर्जी है. बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा. So as Sukanya, we are winding up the event. So any message for all the viewers out there as this COVID-19 is running down? तो क्या message आप उनको देना चाहते हो for all the viewers? Message, I will put it in one line. It is a line by my spiritual mentor, Dr. Daisa Kutida. He has said, hope is a decision. मतलब you have to decide कि हमें hope रखना है, हमें faith रखना है Right. in everything. Right. आपके काम के ऊपर, economy के ऊपर, about the pandemic, we have to have hope. We cannot become Right. hopeless. कुछ भी हो जाए, Right. we cannot. If we can keep hope and we decide to keep hope, then everything is possible. So hope Nothing is a can decision. break us. Yes, yes. It's कितना भी not a बुरा news choice. हो. It's not random. Yeah. So hope is a decision. You have to And make the decision to वैसे have भी hope. आपकी पूरी जर्नी से यही समझ में आया है कि every negative stuff have something positive. So we should keep that Yes. hope with us कि हाँ, जो कुछ हो सके, जो कुछ positive निकलेगा ही निकलेगा. Very true. Absolutely. Okay, so as before we say goodbye to our lockdown talks 4.0 by Sanskriti Events, एक गाना हमारे viewers के लिए to say goodbye, to say अलविदा, to say bye bye. Okay. Any Hindi song? Yes. Yes. Okay. So thanks to Sanskriti Events once again for putting us together, Geet and me, and signing off from Geet and me, Sukanya, with this song. Yes. This was really a great session. Thank you. Okay, here we go. कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाव, कैसे तेरी खुद गर्जी, किसी खोर टिके ना पाव, कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाव, कैसे तेरी खुद गर्जी. ओ बन लिया अपना पैगंबर, कर लिया तो साथ समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रह गया. So okay everybody, that was Lockdown Talk 4.4. आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ, मान जा. Everyone sing along. कबीरा क्यों न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ. Viewers are saying thank you to you for this beautiful mashup, beautiful song, beautiful session, Sukanya. That was really lovely. Thank you everyone And for watching. you really Thank made you, my Geet. day with your stories and with your music, with your soulful voice, and really you are so down to earth. You're so beautiful. So stay happy, Thank you. stay safe, Same to and you, rise Geet. Thank you so higher. much for this interview, Thank and you thank so you to much. Sanskriti Events and Ankit Ji Yes, for thank you making to this Sanskriti happen. Event. Okay. Yes. Bye-bye. And we'll hope to, we will see you again, guys. So yeah, Yes, thank you we so should much. do this Bye, more often. everybody. Yes. Bye. Stay home, stay safe.
lots of love. Bye. Bye.